क्या आप किसी अनजान जगह में जाके अपनापन महसूस किए हैं? क्या आप किसी की शादी में बिन बुलाए मेहमान जैसे टूट पड़े हैं? Just coming back from the event of the wedding. लाइफ के इस मोड़ पे आके मुझे ये समझ आया कि जिंदगी में जितनी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है ना, वही सबसे यादगार पल बन के रह जाते हैं। किन्नौर और स्पीति सीरीज के एपिसोड 3 में हम जा रहे सांगला, बुशहर किंगडम का सबसे पुराना शहर। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि कैसे साराहान का पैलेस 200 साल पुराना है और उससे पहले ये पैलेस हुआ करता था सांगला में, जहाँ पे हम आज जा रहे हैं। We have started on our way to सांगला और यहीं पे जाके हमें देखने को मिलेगा किन्नौर वैली का ओल्डेस्ट फोर्ट। Currently I'm standing at the opposite of a huge waterfall on the way to Shangla. I hope I'm audible and I'll go towards the waterfall now. कल पूरी रात बारिश होने की वजह से झरने सारे भर चुके हैं और ये पानी इतना फोर्स में नीचे तक गिर रहा है कि हवा के झोंके से तो हमको भी भिगा रहा है ये झरना। झरने का पानी बहुत ही तेजी से बह रहा है और आके रोड पे गिर रहा है, जो अभी हम क्रॉस करके आए हैं गाड़ी से। कुछ दूर और चलने के बाद हमें देखने को मिला माँ तरंडा मंदिर। इस रूट पे चलने वाली सारी गाड़ियाँ यहाँ पे 2 मिनट तो जरूर रुकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ तरंडा protects us from the difficult roads ahead। तो देवी का दर्शन करके हम फिर से निकल पड़े। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे एंटर करते ही आपको दिखने लगेगा कि पहाड़ कितने ऊंचे होने लगे हैं। I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? We have finally reached Shangla and it's 2 at the afternoon, and behind me there are these green apple orchards, and here this side we have our hotel Aryan Classic. And while coming here the roads were spectacular. I'll ask a few of my friends how they felt about it. Shriti, খুবই সুন্দর, মানে অসাধারণ বলা যায় যাকে বলে, মানে চোখ পুরো ধাঁধিয়ে যাবে, মানে নিচের দিকে তাকালে মনে হবে স্বর্গ এলাম। থ্যাংক ইউ। তুমি বলো। It's a nice experience and it's a thrilling experience. ऋषि, কেমন লাগলো? बहुत ही अच्छा, बस एकदम शेष। खतरनाक। ठीक है, खतरनाक। And this is the room, and from here we can see a great view of the entire Shangla Valley, and also over there far away we can also see the village of Kamru, which is around 2 kilometers from here. तो तुम कैसे जाते हो घर? चल के कितना टाइम लगता है यहाँ से? 1 घंटा 2 घंटा। डेली 1 घंटा करके तुम जाते हो और लौटते भी हो? नहीं, ऐसा ये मैं मान लूं? हाँ जी, सच्ची में। मिलिट्री ऑफिसर। मिलिट्री ऑफिसर? अरे 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 अरे, ये भैया भी सेम है, इनको भी बनना है। एक सल्यूट करके दिखा दो। ओके, बाय बाय। This fruit we'll find ample in this place. This and apples. This is also called khobani, yellow in color, and this is filled in the trees. And up there, that is the tree for this.
यहाँ पे आके मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि पहाड़ के लोग कितने हंसमुख और मेहनती भी होते हैं। Hello, auntie. After reaching Shangla, we are on our way to Kamru Fort, which is on the top of that mountain, and it's a pretty big hike, and we have to walk a few steps. And there are actually two routes. One road goes from down there, and one road goes from straight up here. And this is the one used by cars up to a certain extent, but our car will not be going through this because it is like pretty narrow road. But this hike might be easier than the other one, so we are taking this route. That over there is the Kamru Fort where we are headed to. Halfway, I think, not sure, but Kamru Fort there. We have traveled all this path, and on top of that mountain we can see a snow-covered peak. So if you are coming here, definitely be sure to ask someone at every step you take and at every crossing you come across. I am walking and I have two very tiny dogs with me. They are also walking through this, so you can imagine how brave these two are. The stairs start from here, so looks like we finally reached the entrance. That is the fort, and this down here is the entrance. Entering Kamru Fort. तो दोस्तों, यही है भुशैर किंगडम का सबसे पुराना गांव कामरू, और इसी में बसा है सबसे पुराना फोर्ट कामरू फोर्ट. द फर्स्ट किंग ऑफ भुशैर डायनेस्टी, महाराजा प्रद्युमन सिंह, रूल्ड फ्रॉम हियर. Just entered the Kamru Fort. So to enter here we have to keep our leather objects and our bags outside, and they will give us a kind of kinnori hat, which we see everyone here wears this kind of kinnori hat, and also they'll give us something to wear as a belt. And I'm inside here now. कामाख्या देवी के नाम से ही कामरू पड़ा है, लेकिन इसका जो पौराणिक नाम है वो मोने, जो किन्नौरी उसमें जो नाम है इसका पौराणिक नाम वो मोने मोने. हाँ जी जी जी. तो कामाख्या देवी की वजह से फिर अच्छा, इसीलिए कामरू बोलते हैं. सबसे पौराणिक गांव है. कितना साल पुराना है ये फोर्ट? कह नहीं सकते, मतलब फिर भी अंदाजा कितना हो सकता है? 100 साल, उससे भी ज्यादा? 100 साल नहीं, हजारों साल से ज्यादा है. वाह. This place has a very rich history, and even it's older than 1,000 years. And if you see the view from here, on both sides there are very high mountains. This is the actual entrance to the fort. असल में कामरू फोर्ट में 7 मंजिल है. पहले 2 मंजिल बना हुआ है पत्थर से, और उसके ऊपर के बाकी 5 मंजिल बना हुआ है लकड़ी से. यहाँ की पंडित जी के अलावा और किसी को अंदर जाने का भी परमिशन नहीं है. और इस फोर्ट के अंदर 33 करोड़ देव देवियां रहते हैं, और वो बस मार्च के महीने एक ही बार दर्शन किए जा सकते हैं, जब उनको बाहर लाया जाता है. फोर्ट एरिया में एक मंदिर भी है जिसमें कामाख्या देवी का पूजा किया जाता है, और यहाँ के लोग ऐसे मानते हैं कि ये देवी असम के गुवाहाटी से लाया गया था हजारों साल पहले, और तभी से यहाँ का नाम हो गया है कामरू. Over there, far away, I can see some kind of dance is going on. There's a wedding. So we came to Kamru Fort and we met a couple of folks, local people, and there's a wedding going on and they are the guests here. And we clicked some photos with them. Hi बोल दो थोड़ा कैमरा में सब लोग. Now we are trying to go to the local wedding that is happening here at, like, I don't know, it's going to be a different cultural experience. यहाँ के लोग
इतने इनवाइटिंग होते हैं कि हमें खुद एस्कॉर्ट करके ले गए अपने साथ। सेब के बगीचों में से होके हम फाइनली पहुंचे उस स्पॉट पे जहां पे शादी का मेन इवेंट चल रहा था, द किन्नौरी वेडिंग डांस। इस डांस फॉर्म का नाम है कायंग और इसके साथ बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है वो भी लाइव म्यूजिक है। मैरिज के इवेंट के कारण यहाँ पे सभी अभी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहने हैं उनका, और इस कॉस्ट्यूम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये टोपी, जिसको लोकल लैंग्वेज में थेपंग बोलते हैं। ये मस्त फेस्टिव एनवायरनमेंट देख के मैं भी अपने आप को तो बिल्कुल रोक नहीं पाई। We went and joined to the dance. इस सफर पे मैं निकली थी खुशी ढूंढने, और यहाँ आके इन लोगों के साथ मिलके मुझे ऐसा लगा कि मैं जो ढूंढने निकली थी वो मुझे मिल चुका है। Just coming back from the event of the wedding, it was so fulfilling because these people, they are so inviting. We danced with them and really, like, they were telling us to have something before we leave, but yeah, we did not want that. And also the location of this wedding was through this apple orchards, and I don't believe in plucking their apples, which is a source of their income, but two were fallen in the grounds, so I have picked them and I'm going to taste them once I get to my room and wash them. So like, never really imagined that Sangla could be so exciting, but luckily today there's a wedding and we attended it and got a totally different cultural experience. Just I'm totally overwhelmed by this. কিন্নরি বিয়ে কেমন লাগলো? হেভি হেভি, প্রচুর নেচেছি। I'm sitting outside my hotel in the lawn and I have these apples and apricots. I've washed them and now I'm going to taste them. First, the apricot. This is sweet. Has a seed inside it. Next, trying out this apple, green but still yes. Not sweet, but yeah, I can understand how this is going to taste after it's fully ripe. Closing today's episode on a happy note, and see you very soon at Chitkul. On the way to Chitkul from Sangla, we have stopped in front of a waterfall. This is India's last school before we reach China. Can you just believe that we came from that down road here